Hello students and welcome to Learno Spark Biology. My name is Nandini और इस वीडियो में हम CBSE क्लास 10 बायोलॉजी का पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस शुरू करेंगे। इस चैप्टर को हम पार्ट वाइज कंप्लीट करेंगे। So let's start with the introduction of this chapter, life process. So the very first question that comes to our mind before starting this chapter is how to differentiate between living and non-living organisms. How do we decide that something is alive or not? And the answer to this question is movement or molecular movement. The most exclusive criteria that we use to differentiate between living and non-living thing is movement. Every living cell shows movement, some or the other kind of movement. कुछ movement visible होते हैं and कुछ movement visible नहीं होते हैं by our naked eyes. So movement is the answer. Next question which comes to our mind is what are life processes? क्या है life processes? The basic processes which are essential for the survival of any living organism are life processes. वो processes जो किसी भी organism को जिंदा रहने में help करते हैं उन्हें हम कहते हैं life processes. Example: nutrition, respiration, transportation and excretion. ये चार processes बहुत important हैं किसी भी organism को survive करने के लिए. So let's start with the very first topic of this chapter, that is nutrition. न्यूट्रिशन को हम 2 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे. पहला न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड दूसरा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स. सो न्यूट्रिशन के इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं. व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड. फूड को ऑब्टेन करना इज न्यूट्रिशन एंड उस फूड को ऑब्टेन करने के बाद यूटिलाइज करना बाय द बॉडी इज न्यूट्रिशन. यूटिलाइजेशन कैसे होगा? हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे ग्रोथ, रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यूज़, ये सारी डिफरेंट टाइप ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं. इन सब के लिए वी रिक्वायर न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन प्रोसेस है जो इन सभी चीज़ों में हमारी हेल्प करता है. न्यूट्रिशन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. इन दोनों पार्ट्स को हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे. So let's start with autotrophic mode of nutrition. Autotrophic nutrition is the process in which organism produces its own food by the use of simple inorganic substances. जो भी organism autotrophic mode of nutrition को फॉलो करता है वो inorganic materials को यूज करके अपना खाना प्रिपेयर करेगा, अपना फूड प्रिपेयर करता है. So generally all the green plants follow autotrophic mode of nutrition. Next is heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition is a kind of nutrition where organisms are dependent on other organisms for their nutrition. जो भी organism heterotrophic mode of nutrition को follow करता है वो अपने nutrition के लिए दूसरे organisms के ऊपर dependent होता है, like us, humans. So any organism who is following heterotrophic mode of nutrition directly or indirectly they are dependent on plants for their nutrition. सो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप्स को हम पढ़ेंगे जो कि हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन. वन बाय वन इन्हें हम डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले विल डिस्कस सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. व्हाट इज दिस? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर. So any organism who is following saprophytic mode of nutrition, they will be depending on dead and decaying organic matter for their nutrition. In the saprophytic mode of nutrition, the vital nutrient required by the body are collected from dead and decaying matter. Organism following saprophytic mode of nutrition, they will be collecting their vital nutrient which is required by the body from dead and decaying organic matter. Example: rhizopus, yeast and mushroom. So these are the organisms which are following saprophytic mode of nutrition. Next we have parasitic nutrition. So what is parasitic nutrition? Parasitic nutrition is a type of nutrition in which the organism live on or inside the body of their host and derive the nutrition from them. So if in case the parasite is living on the body of the host, they are known as ectoparasite. And if in case the organism is living inside the body of the host, they are known as endoparasite.
So this is parasitic mode of nutrition. Example, very common example, tapeworm. Tapeworm is the common example. Next we have Holozoic nutrition. What is Holozoic nutrition? It is a type of heterotrophic nutrition that is characterized by internalization and internal processing of the food. It means Holozoic nutrition is a type of nutrition which includes digestion, absorption and assimilation, all the processes happening inside the body of the living organism. This means this is a type of nutrition where the processing of food is done inside the body of the living organism, and the organism which follow this kind of nutrition are amoeba, paramecium and humans. So that's it for today's video. If you have any doubts, you can put it in the comment box. इस chapter के और parts का link आपको description box में मिल जाएगा. Please subscribe the channel if you like this video, and for more videos keep on watching Learno Biology.